Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. Student, today date is 22 and I am teaching you chapter caring and sharing. So, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So we are discussing about the school property. School is also known as our extended home. So student, our school is like our extended home. Why we say that? We say that school is our extended home. Reason is that student, school is the only place after our home where we spend maximum time. Is it clear? After home student, school is the only place where we spend maximum time. Okay, that is the reason we say it is our extended home. So student, when you go to school, you observe that there are many facilities in the school, like you get chairs, table, clean drinking water facility, okay, computer facility, library facility, music facility, dance facilities, and you have teachers also who teach you. So you are getting many facilities in the school. You are getting many facilities in the school. So student, we should take care of the school property also. Is it clear? It is our duty to take care of the school property. ठीक है, जैसे बेटा आपकी अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हाट इज इनसाइड योर बैग, योर स्कूल बैग, इनसाइड इट नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, sharpener, all these things are inside your bag. So that things belongs to you. You always take care of your things. In the same manner student, school is for you. It gives you lot of facilities. So student, it's our duty that we also take care of the school property. We also take care of the school property. Is it clear? Now we started. First point we have already discussed. Do not litter the classroom corridors extra. जो क्लास के बाहर की जगह होती है ना, बरामदा, उसी को बेटा हम लोग कॉरिडोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो क्लास के अंदर गंदगी नहीं मचानी चाहिए. हाउ वी डू दैट? वी शार्प द पेंसिल एंड वी थ्रो द pencil shaving on the floor. Students have a habit of tearing the pages, or they play many games with the help of these pages. They do art and craft work. Even at that time they throw lot of pages on the floor. So this is not good. Student, you will find that in every class you have a dustbin to throw the waste materials in that. So please, that dustbin is for you, because आप लोग को हमेशा ये बताया जाता है, if your surroundings are clean then only you are fit and healthy. गंदी जगह में बैठने में, खेलने में अच्छा लगता है? No. Is it clear? So student, you must use that dustbins which are in your class or outside your class, and help other also to
keep the surrounding clean. Next, do not write or draw on your desk, classroom walls. See student, this is a habit of the student that with any sharp thing or with a pencil or pen, they are writing the names, their own names or their friend names. So this is not good. Is it clear? Even some student, they are writing their name with the help of a needle of the compass, which you find in the geometry box. So this is not good. This is don't think that this is the school property. Why should I care when the school is doing so much for you, so much facilities school is providing to you? So student, this is our duty also, that we also take care of the स्कूल प्रॉपर्टी. जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत है, इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज पीपल्स. सो दे वर्क फॉर द, जितने भी लोग हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, बट वी हैव टू कोऑपरेट विद देम. हमें भी उनके संग कोऑपरेट करना है, तभी तो वो हमारी हेल्प कर पाएंगे. इज इट क्लियर? अब देखो थर्ड पॉइंट, टू केयर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. So when you are going in the library, be silent. Don't read loudly. Okay? And don't tear the pages of the books. Because student, library is the place where you get all types of books, study books also, story books also. Many things are available in the library and all these books are for you. So we should, you should take care of the library books also. Next, remember to there are many things which run with the help of the electricity and we pay money for that also. So student, remember to switch off the lights and fan when not in use, and we always do that in the morning. Student, when we go for the assembly, the first thing which is done by you is that you switch off the fans and light of your class and close the door of the class also. And even there are some periods in which we have to go outside the class. For example, your library period, your music period, dance period, games period, activity period. So at that time also we go out from the class. So whenever you go out from the class, student, because so don't forget to switch off the light and fans of your class. Okay. Next, now this is also a very important point. Do not leave the tap open. What is a tap? From where you get the water and fill your water bottle, or you wash your hands, face. So whenever you use the taps, please close it. Don't, do not leave the tap open, because you know that water is very precious. Even I explained you
our earth is 72% of the earth is covered with water, but even only 3% water is fit for drinking. क्योंकि बेटा एक बार वो टैप से वाटर गिर जाता है, सो इट बिकम डर्टी, उस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते फिर. इज इट क्लियर? सो वेन एवर you are using the tap for any purpose, please close the tap after using it. Okay, because we have to save every drop of a water. Is it clear? Sport facilities, next point. Sports facilities, provided by school should be used carefully. Okay, next, see, in a games period, the games teacher teach you many new skills of playing. Is it clear? So there are many things available in the sports rooms like football, basketball, badminton. Okay, there are Ludo, indoor games also, Ludo, chess, carom board. So there are many things are present in your sports room. So student, you should take care of that things. You don't think that ये हमारी पर्सनल थोड़ी ना है, टूट जाएगी तो क्या हुआ. No, this is not right. Okay, this is not right. So whenever you are playing any sports game or you are using any sport things in any game, then please take care of that things also. Okay, use that things carefully. ठीक है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मार के उसे तोड़ दिया, ये हो गया, क्या हो जाएगा, स्कूल का है. दैट इज नॉट राइट. देखो, स्कूल आपको फैसिलिटीज दे रहा है तो आपको बेटा कॉपरेट करना है. आप कॉपरेट नहीं करोगे, स्कूल हो सकता है कि आज आपको बहुत फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो तो आपकी जो फैसिलिटीज हैं लेस होने लगेंगी. इज इट क्लियर? सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एज ए स्टूडेंट when you are studying in the school. Now, so see in this picture also, it is shown in this picture also. Write any other ways you can take care of school property. See, this is a small homework for you. 1 2 3 4 5 6 points is given in the book. How you take care of the school property. So accept this. These points are already given in your book. So you write other points, what care, how you can write some more points that how you can take care of school
property. Okay, student. Now, page number 89. Now, see, student, how we should take care of the school property that we discuss. Now, student, let's discuss how can we care for the public property. Now, I hope that all of you are able to understand what is the meaning of a public property. Property that belongs to everyone and not to any single person is called it public property. Public that belongs to everyone, okay, and not to any single person is called it a public property. क्योंकि I will teach you how you will take care of the public property. इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि what is public property, that concept should be clear in your mind. और ऑलरेडी बहुत से एग्जाम्पल के संग भी डिस्कस किया है, लाइक मार्केट, roads, like public properties like market, road, parks, museum, zoo, railway station, bus stand, market, road, parks, museum, zoo, railway stations, and next is bus stand extra. These all are the example of the public property. So बिफोर केयरिंग से पहले एक बार मैंने आप लोग को फिर से रिवाइज करा दिया स्टूडेंट कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है. द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू एवरीवन, it does not belong to any single person, that's a public property. And what are the example of public property? That is on the board. Is it clear? Market, road, parks, museum, zoo, railway station, bus stand, extra, all these are what? All these are public properties. Now let's understand how can we take care of these public properties. First point is given, streets. The light along the streets and roads, जो रास्ते होते हैं, रास्तों के किनारे आप लोग देखते हो ना, या रोड के किनारे भी आप कह सकते हो, on the left and right side you will see there are electric poles in which you will see the light, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट बोलते हैं. Okay, because in daytime, due to the light of the sun, the only source of light is sun, and sun is a star. So डे टाइम में तो इतनी ज्यादा सनलाइट होती है कि वी नो नीड ऑफ एनी बल्ब और एनी स्ट्रीट लाइट की जरूरत मॉर्निंग में नहीं होती है. Because in the morning the things are very clear, all the things are visible to us. But in the night time, student, there is a lot of traffic on the road, and these road lights help us. If these street lights are not in a proper functioning or in condition,
then what's happened, there is a lot of road accidents. Okay, because vehicles are moving with a very high speed. Is it clear? So student, the lights along the streets and roads are meant to help everyone. तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हैं, what they are doing, they are helping us so that we can move on the road. रोड पे इतनी व्हीकल्स चलती हैं and they are moving with the very high speed. So what are these lights are? Street light, they are helping everyone so that सेफली वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन, जिससे कि हम सेफली जहां हमें जाना है वहां हम पहुंच सकें. सबकी हेल्प करती है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए तो लगी नहीं है. इज इट क्लियर? क्योंकि रोड पे तो सब मूव करते हैं. सो वी शुड नॉट डैमेज और ब्रेक दिस लाइट. अब तुम लोग सोच रहे हो कि डैमेज और ब्रेक दिस लाइट, बेटा इट्स अ हैबिट ऑफ ए, सी what's happened, street light are at very height. ठीक है, स्ट्रीट लाइट क्या होती है, बहुत हाइट पे होती है. तो बोल रहा है डोंट डैमेज. सम टाइम क्या है, पीपल्स ब्रेक द स्ट्रीट लाइट और डैमेज द स्ट्रीट लाइट विद द स्टोन. दे थ्रो स्टोन and in this manner also they damage or break the street light. So don't do that. These lights are for everyone and these light help us. Okay, so we should not damage or break these lights. next है, so first point क्या आया, स्ट्रीट लाइट्स. इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, तो स्ट्रीट लाइट्स है आपकी, डोंट डैमेज दिस. ओके, नेक्स्ट आया थ्रोइंग गार्बेज. ठीक है, रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है, लोग अपने घर क्लीन करते हैं और क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, गार्बेज जो कूड़ा करकट उठाया और सीधे रोड पे फेंक दिया. दैट इज आल्सो नॉट राइट. इन एवरी कम्युनिटी, आप जिस भी एरिया में रहते होगे बेटा, आप देखते होगे देयर इज अ प्रॉपर प्लेस फॉर दैट, where all the peoples are throwing the waste of the houses in that area, and after that there is a, it is collected and take away from the that area. Okay, next है throw garbage on the street and pavements is not a good thing. ठीक है, जो साइड के रोड के किनारे के जो बने होते हैं पक्के फर्श, तो ये सब क्या गंदे नहीं करने चाहिए. ठीक है, कूड़ा करकट इस पे नहीं मचाना चाहिए. इट मेक्स स्ट्रीट्स अगली एंड डर्टी. ठीक है, अगर आप स्ट्रीट्स पे गार्बेज कूड़ा करकट फेंकोगे तो वो स्ट्रीट्स देखने में अच्छी लगेंगी नहीं, और मोस्टली बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है. पीपल स्लिप, किसी ने बनाने खाए और फेंक दो उसके. कई बार गार्बेज और फ्रूट्स ये सब रोड्स पे फेंकने से भी बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं. इज इट क्लियर? सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ओके, वी शुड थ्रो दीज वेस्ट मटेरियल इन अ प्रॉपर डस्टबिन. ओके, इन अ प्रॉपर डस्टबिन. नेक्स्ट है, सो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड. इससे भी बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं. देखो फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रीन वेजिटेबल ये सब फेंक लो, बाई चांस सम व्हीकल इज कमिंग विद ए हाई स्पीड, मे बी कोई स्लिप भी कर सकता है, और मे बी सम टाइम हैपन दैट एट ए टाइम समवन इज मूविंग वेरी फास्ट एंड सम एनिमल कम ऑन द रोड. भाई एनिमल है, ही डोंट कम ऑन द रोड टू से यू स्टॉप, आई वांट लिफ्ट फ्रॉम यू. वो रोड पे इसलिए नहीं आएगा कि रोक जो, मुझे भी थोड़ी देर लिफ्ट दे दो. वो क्यों आ गया एक रोड पे? बिकॉज ही इज दैट एनिमल वांट टू ईट दैट
ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ऐसे में भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो डोंट थ्रो गार्बेज एंड ईटेबल आइटम्स ऑन द रोड। आल्सो स्ट्रीट्स आर लाइंड विद ट्रीज। ठीक है, और जो ये रास्ते होते हैं, रोड जो रास्ते हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां, इनके दोनों तरफ क्या होने चाहिए? ट्रीज भी होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ट्री गिव अस शेड। ठीक है, ट्री गिव अस शेड। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द, there are many important function of the plants, because they are the only producer. We animals and human beings, we all are living, but we can't produce our own food. So the trees bind the soil. जो soil erosion क्यों होता है? ट्रीज ज्यादा काटोगे तो सॉइल इरोशन होगा। वाई? बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दे बाइंड द सॉइल, वो उसे होल्ड किए रहते हैं बहुत टाइटली। इज इट क्लियर? सो डू नॉट कट द ट्रीज, दे प्रोवाइड अस शेड, होल्ड द soil, and what happen, and keep the air clean. ओके, आज हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं बहुत एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बिकॉज द रोल, दिस इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द प्लांट्स। दे मेक द एयर क्लीन, बट इफ यू कट देम, number of plants in that areas are very less, then there is a lot of pollution in that area. शहरों में देख लो, बहुत कम पेड़ देखने को मिलते हैं। so if number of trees are less, it means lot of pollution in that area, because these plant clean the air, because these plants clean the air. Next है, we should not cut these tree, that I have already discussed with you कि trees हमें cuts नहीं करनी चाहिए, because trees are producer. Okay, we are depend on our food from trees. ठीक है, so we are totally depend upon these plants. सन की एनर्जी को यूटिलाइज कौन करते हैं? यही ग्रीन प्लांट्स करते हैं। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, इट ऑब्जर्व द लाइट। ठीक है, सो एंड विद द हेल्प एंड द होल प्रोसेस, यहां तो इतना है नहीं, बस छोटे में बता देता है। एंड दिस होल प्रोसेस in which the plant prepare their own food in the presence of a sunlight, carbon dioxide, water and minerals which are present in the soil. This whole process is known as photosynthesis. And tree clean the air. Our living gas is also oxygen, and from where we are getting this oxygen? We are getting this oxygen from the green plants. So even tree clean the air also. So if you are cutting lot of trees, when number of trees become very less, so have you think, student, is our life possible on this planet? क्या आपने सोचा है कि हमारी लाइफ पॉसिबल होगी प्लेनेट पे? so answer is what? No, because we are getting oxygen from the plants. So student, don't cut the trees, don't cut the trees. Okay, and every year plant one or more trees. ठीक है, हर साल एक या एक से ज्यादा पेड़ जरूर लगाया करो बेटा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ so next it is given, did you know the government has imposed heavy fines for illegal cutting of trees? Now the law has been made
कानून बना दिया है गवर्नमेंट ने। अब कोई भी पेड़ को काटेगा बेटा बहुत ज्यादा फाइन भी लगती है, फाइन नहीं भरोगे तो जेल में डाल देते हैं। ऐसा गवर्नमेंट को करना पड़ा, अब लोग डरते हैं। इफ एनीवन कट द ट्रीज without the informing them, so that person have to give fine. Otherwise if we are unable to pay the fine, then they put them in prison also. Okay, thank you student.